आ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने उद्बोधन में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रस्तावित किया है। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम का बोझ कम करने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली और इनकी शक्ति का एकीकरण करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकें। यह सर्वविदित है कि कोविड की महामारी में जन जन ने आयुष को अपनाया है और इससे लाभ पाया है। इस संकल्प को गति देने के लिए आयुष मंत्रालय ने हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य इस विषय के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज के छात्रों में आयुष के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। Now, as a detailed and a lucid description has already been given, I will give you a brief regarding the objectives of this program. So, the major objectives of the program is basically to create awareness regarding the Ayush system in the college and school-going students all across the country. Also, creating awareness regarding the promotion of health, focusing on the health promotive and disease preventive aspect. Then creating awareness regarding the medicinal plants and also about the diet that basically includes the practices of traditional food habits as per the season across the country, with the motive to fulfill the motto of local for local. The another objective is to promote the practices of self-care and inculcate the habit of healthy lifestyle. And basically, the target population is the young and the nurturing minds, that are the students and the other teaching and the non-teaching staff, principals of other schools and colleges across India. I'm happy to say that till now 75,000 of the schools and colleges have joined with us both passively and actively through the Facebook and the YouTube live. So this is all about the program, and now I take the privilege to graciously welcome all the dignified dignitaries, those who have graced this webinar with their gracious presence. In this series, I firstly welcome our chief guest, Sri Sarbananda Sonowal sir, who is an Honorable Cabinet Minister, Ministry of Ayush and Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Our guest of honor, Dr. Munshwara Mahendra Bhaiji, who is an Honorable Minister of State, Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development. I also welcome the Most Honorable Director of All India Institute of Ayurveda, Professor Dr. Tanuja Mestri ma'am, and President Board of Ayurveda, Dr. B.S. Prasad sir, President Board of Homeopathy, Dr. Tarkeshwar Jain sir. I also welcome the profound Dr. Jayant Dev Pujari sir, who is an Honorable Chairman, National Commission of Indian System of Medicine, and equally respectful Dr. Anil Khurana sir, who is the Chairman of National Commission of Homeopathy, and all the other dignitaries from Ministry of Ayush, principals and school students who have joined with us pan India. I also welcome Dr. Archana and Dr. Aziz as our speaker on Ayush system for the session. Now, moving ahead for the auspicious beginning of the program, and in order to seek the blessing of the Lord of Health and Wealth, Lord Dhanvantri, let's all join in the Dhanvantri Vandana.
स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद लेने के उपरांत हम आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। यह हमारे पास सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे मध्य में अध्यक्ष NCISM वैद्य JMC देव पुजारी उपस्थित हैं। मैं सर से स्वागत वचन करने के लिए सर से निवेदन करूंगा। So moving ahead, we are also honored to have Director All India Institute of Ayurveda, Professor Tanuja Nesri. I request ma'am to provide a briefing of the year-long action plan and the activities of this Amrit Mahotsav. Please, ma'am. Yeah, first draft by 7th is fine. I'm so sorry. I got the vaccine yesterday. After that, I couldn't be quick with sending it all to you and the other editor. So I will send it, yeah. Bye-bye. Professor Tanuja Nesri. Until we have ma'am on board, we have and cases, the activities which have been carried out by Ministry of Ayush during this testing COVID times. So this film will be played for you all. वैसे ही हजारों वर्षों पुराना
निश्चित ही आयुष मंत्रालय द्वारा इस कोविड महामारी में उठाए गए ये कदम अतुलनीय और सराहनीय है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए वी आर fortunate to have Director All India Institute of Ayurveda Professor Tanuja Nesri. I request ma'am for briefing of the year-long action plan activities of the Amrit Mahotsav. सभी से निवेदन है कि अपना माइक वे स्विच ऑफ रखें ताकि हम हमारे जो एस्टीम्ड गेस्ट हैं उनको सुन सकें आसानी से। ज्वाइन कहिए। हाँ 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 साहब। Ma'am, we are able to see you, but we are not able to hear you. जैसा कि पहले हमने बताया था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आयुष प्रणाली के बारे में हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक करना। इस क्रम में हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अर्चना, जो कि आयुष के ऊपर एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन देंगे। प्लीज मैम। म्यूट करिए। फुल स्क्रीन है। वेलकम टू आजादी का अमृत महोत्सव। Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,
Government of India is organizing series of events to commemorate the 75th anniversary of India's independence. It is celebrated as Jan Utsav in the spirit of Jan Bhagidari. Ayush is also celebrating week-long bouquet of activities and campaigns from 30th August, showcasing the strengths and commitment, and will continue to deliver the same throughout the year. To orient the young minds towards Ayush and help them remain healthy and happy, we are launching today series of sensitization lectures and presentations on Ayush systems. Hamaara Ayush Hamaara Swasthya. So let's begin with the contents of this presentation. We will be introducing you all to the genesis of Indian system of medicine. Then we'll enlighten you all about the Ayush systems and also talk about strengths of the components of Ayush and how it is useful to the youth. So let's begin the journey. उन्होंने हमें म्यूट कर दिया। Welcome to Azadi Ka Amrit Mahotsav. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Government of India is organizing series of events to commemorate the 75th anniversary of India's independence. It is celebrated as Jan Utsav in the spirit of Jan Bhagidari. Ayush is also celebrating week-long bouquet of activities and campaigns from 30th August, showcasing the strengths and commitment, and will continue to deliver the same throughout the year. To orient the young minds towards Ayush and help them remain healthy, we are launching today a series of sensitization lectures and presentations on Ayush systems. Hamaara Ayush Hamaara Swasthya. So let's begin with the contents of this presentation. We will be introducing you all to the genesis of Indian system of medicine. Then we'll enlighten you about the Ayush systems and also talk about the strengths of components of Ayush and how it is useful to the youth. So now let's begin the journey. Thousands of years ago, with the human evolution from the food gatherer and hunter to an observer and thinker, migration embarked the journey of exploration.
Meanwhile, in Indian subcontinent, sages and philosophers realized that we are part of the cosmos and we have immense healing power, which led to the discovery of a new way of journey of life, way to healthy life, way to prevent diseases, and a way to live long life. This gave birth to Indian traditional system of medicine. World's earliest universities, renowned for medical knowledge like Takshila, Nalanda, Ratnagiri, Vikramshila, Pushpagiri, and many more were coming up in India, where thousands of students from all over the world, like Greece, China, Syria, etc., were attending them to gather knowledge. This knowledge later contributed to the development of the Unani system of medicine some 2,500 years ago and to the Chinese medicine some 2,000 years back. Sushrut's contribution in the development of modern surgery will always be remembered, and therefore he is known as father of surgery. Indian traditional system became popular in more than 100 countries of the world. Concept of prevention of diseases and promotion of health has been introduced to the world by India, and therefore India has become mother of healthcare system to the world. The growth and development of human beings has also led to stress, lifestyle disorders, complexities, and dependency on medicines. This has caused exponential growth in treatment cost. To overcome these, people are now returning back to the ancient wisdom of treatment, that is, towards the traditional healthcare systems. In India, this has led to the creation of Ayush ministry, under which all these systems are flourishing. So, under Ayush, we have Indian system of medicine, Ayurveda, Siddha, Yoga and Naturopathy. We also have Unani Tib, we have Tibetan Sova Rigpa and Homeopathy. To introduce you all to these different components of Ayush, may I now invite Dr. Aziz to carry on this journey of knowledge. Over to Dr. Aziz now. Thank you, Dr. Rachna, for an elaboration on genesis of Ayush system. Am I audible? Yes. Let me now take you all on a tour in understanding the motto, principles, and strength of all the components of Ayush. Every healthcare system works with the motto of healthcare, but the Ayush system has very special, highly contributing objectives which are also now accepted by the entire world. The slide sharing has gone. Can you put the slides back, please? I am unable to see the slides. Still not able to see the slides. Yes, thank you. Can you put on the presentation mode? Thank you. Yeah, now I can see that. I hope everybody can visualize that too. As you all know, that aims and objectives basically make the growth of any particular science. It's very well said. Neutralize the threat before the threat neutralizes you.
That's where prevention plays as a major role or major motto of Ayush system. The whole world today has understood the importance of remaining healthy, and promotion of health is one of the major mottos of Ayush again. Treating diseases in a gentle way is where Ayush is leading. Can you put back the slides, please? There's some concern. I'm unable to see the slides. Yeah, it's gone again. Right. There are diseases that are rendered incurable. We in Ayush can frame better palliative therapies. We all know this, that there are diseases that are of mental origin, that are of physical origin, that needs a good amount of rehabilitation. And that's where in Ayush, we also have rehabilitation as one of the goals. This remarkable package of Ayush health system is transforming lives of individual, of family, of a community, and ultimately contributing to the good health of the nation. Next slide, please. Let's now glance at Ayush system individually. The glory of Ayurveda is known to the world as the knowledge system of health and happiness. The acceptance of Ayurveda is celebrated almost in every corner of the world, having taken its origin from India. Ayurveda believes that the external universe and the human body shares the Panchamahabhutas in common. It leads to the formation of functional units of the body known as tridoshas. When these tridoshas disbalance, it leads to the formation of disease. That is where we can balance this by using plants, minerals, animal products, and lifestyle correction. The strength of Ayurveda lies in individualized therapy based on Prakriti, holistic approach by considering mental, physical, social, and spiritual aspects. There is a regimen of how to live every day and how to live in a season that makes an individual remain healthy throughout the calendar. The heart of Ayurveda is Panchkarma. It helps to purify and also for the revitalization of the body. The effective rejuvenation and immunomodulation through Rasayana Chikitsa has been one of the most contributing concept of Ayurveda and strength of Ayurveda. The next component of Ayush is yoga. It is known for harmony and peace. It works on the principle of connecting human consciousness with the universal consciousness. World has witnessed the efforts of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on glorifying 21st June as International Yoga Day. More than 190 countries in the world are now carving ways for a healthy life through yoga. The next component of Ayush is Unani Tib medicine, which means a great medicine. It is based on the principle of natural healing by balancing the four humors of the body. The next wing of Ayush is Sowa Rigpa, known as Science of Healing. It is also commonly known as Amchi system of medicine. It is popular in many parts of the world that includes Tibet, Bhutan, and Himalaya regions of India. The next one is one of the oldest Ayush system, the Siddha system, which means a complete accomplishment. The basic mantra of Siddha is food itself is medicine and medicine in itself is food. The strength of Siddha lies in its different components. The yoga practiced as Ashtanga Yoga, the Kaya Karpam that makes the body stronger by rejuvenation, Marma Chikitsa, which is widely used today in therapeutics and sports medicine, Rasavattam and Muppu, which deals with safely converting metals into medicines.
One of the next most powerful system of Ayush is homeopathy, known widely as sweet pills to good health, proposed by German physician Dr. Hahnemann in 1796. It works on it works on the principle wherein which it is known as similia similibus curantur. It is spelt as it like be cured by the like. The homeopathic medicines stimulate self-healing power of the body. The strength of homeopathy is hidden in its individualization of treatment, holistic approach, the minimum and the dynamic dose that it considers, rapid, gentle, and permanent restoration of health, immunomodulation, removal and annihilation of the diseases in its whole extent. The next important branch of Ayush is naturopathy, which is driving the whole world towards a better health by using nature cure through mud therapy, water therapy, sun therapy, etc. Naturopathy is also contributing to health by diet and lifestyle changes. We just saw that the entire Ayush system works on certain common principles. Just to brief, it works on promoting self-healing, healing with holistic approach, imbibing harmless treatment, catering individualization, and primarily focusing on prevention and health promotion. With all these astounding benefits, we see that Ayush is reaching the universe. There are countless celebrities who promote and use Ayush. May I now request Dr. Archana to brief on the same. Thank you, Dr. Aziz. So let's have a glimpse at few of the celebrities and what they have to say about Ayush system. Christy Turlington, American celebrity supermodel. And she says, I can't imagine my life without yoga. It is the first thing in the morning. Also, I'm a big fan of Ayurvedic medicine and Ayurvedic body massage oils. I know it's a science derived from nature, and I resort to Ayurvedic medicines to stay healthy. Style icon and Indian film actress Sonam Kapoor, who lost lot of weight before joining the film industry, says, my secret of losing weight and staying in shape is the power of yoga and meditation. Who doesn't know about the famous footballer David Beckham? He used homeopathy when he fractured his toe before 2002 World Cup. He told the world, the impressive results of treatment that I got from homeopathic medicines has what made me fine today. Inspiration for many, and one of the few Indian actors for whom fitness is a way of life, Akshay Kumar. He asserted the importance of Ayurveda and revealed in his famous pillow talk that he has been following Ayurveda for the past 25 years. He says, people are unaware that in the form of Ayurveda, God has blessed India with a priceless treasure. So these were some of the thoughts of some famous celebrities, though the list is very, very long, but we have limited time. So let's move on. Now, many of you must be thinking, what Ayush has to offer to the young generation? Ayush is very popular amongst children and old age. But at the same time,
It is also beneficial for the adolescent health problems. Along with the counseling, our medicines works very well in the scholastic problems like lack of concentration, weak memory, psychological problems like depression, suicidal thoughts, aggression, behavioral problems like lack of confidence, restlessness, even the organic problems like menstrual problems in young females, bedwetting, etc. Ayush system has also helped in de-addiction in cases of substance or drug abuse. To look beautiful, what we need? We need clear, lustrous skin and healthy hair, isn't it? So we in Ayush have lot to offer. For skin toning and luster, we have various oils and powders for massage. To take care of acne, blemishes, and various other problems, Ayush medicines have proven to be very efficacious. To prevent dandruff, falling of hair, and graying of hair, help of various hair packs and hair oils can be taken. The youngsters who are interested in sports can enhance their endurance by using rasayanas and various Ayush rejuvenators. Body flexibility and concentration can be improved by medicines and by practicing yoga, abhyanga, and marma manipulations. We all have experienced a big change in corona times. Shift of offline classes to online classes, leading to long hours before the screens. Many of the students, they complain of neck pain, backache, and eye problems. For this, Ayush has got so many things to offer. The postural strain can be relieved by yoga, marma chikitsa, and by the upkarmas like abhyanga and griva basti. Tarpan and eye exercises can give relief to the eye strain. Many eye drops are also available to prevent the dryness of eyes and sharpen your eyesight. To relieve the exam-related stress, yoga and meditation can be practiced along with Shirodhara and Shiro Abhyanga, that is, head massage with various oils. Various Ayush preparations are now available which not only sharpen the memory and concentration but also relieves anxiety before examinations. Who is an ideal human being? The person who possesses all the characters that are considered virtues in the society, the one who can influence others. In Ayush, we have prescribed lifestyle and code of conduct, Sadvritta. In Ayush, we have prescribed daily regimen, Dincharya. We have prescribed seasonal regimen, Ritucharya. It describes when to eat, what to eat, and how much to eat. By following these regimens, one can attain the ideal state of mind, body, and soul. Now, I would like to invite Dr. Aziz again to discuss few general aspects of Ayush. Thank you, Dr. Archana, for casting light on various areas that Ayush can contribute to. We shall now move forward to take on few questions that may be lingering in the young minds. May I have the next slide, please. There are many scholars and individuals who keep us posted and keep us asking if Ayush system is an evidence-based one, or does it really have any scientific background? It is just to bring to the notice that there are research councils specific to each one of the Ayush systems. CCRAS, which stands for Central Council for Research in Ayurveda System,
Similarly, we have research councils for homeopathy, Unani, yoga naturopathy, and Siddha. Most of us will be surprised to know that the Ayush research portal has more than 32,000 research papers contained in it. One of the very recent surveys by Mint during COVID times has clarified that when it came to trusting of various approaches for COVID, Ayush systems are no less popular, with Ayurveda topping the list with 51% likelihood by the urban citizens. They trust more of Ayush systems. And you can also see that the other Ayush systems are also on a great demand. How has Ayush been able to manage this particular challenge of COVID is simply by the three means: the prophylaxis, the management, and the post-COVID management. Where the immune boosters were used for prophylaxis, Ayush 64 was used for management, and Rasayana and rejuvenation therapy was used for post-COVID management. The world has also noticed that there are more than 180 research publications and about 126 studies for Ayush and COVID. This proof is too large to substantiate the evidence-based and scientific approach of Ayush. Next slide, please. Youngsters and parents might also have another questions in mind as to whether we have a governed education system in Ayush. Just to bring to notice that there are close to 800 institutions in India which offer Ayush education for undergraduation and post-graduation. The admission happens through NEET once in a year, and all the institutions are governed by National Council of Indian System of Medicine, Ministry of Ayush, Ministry of Education. There are also more than 15 universities which offer PhD courses. Thus, we can be sure that your education in Ayush is power packed for a brighter career. Another million-dollar question that needs to be addressed is after education, what are the areas that I can make career in? To bring to notice that Ayush is the only system where you can make a multi-dimensional career because it provides you multi-dimensional opportunities. The entire world today is now open for natural ways of healthcare system. Hence, there will never be an obstacle to the flow of seekers of Ayush. The holistic approach and individualized therapies make Ayush a very special attraction to seek healthcare. Health and rejuvenation concept is roaring in the world. The manufacturing industries with quality products are constantly in the need. The hospitals and clinics need specialists, super specialists, and general medical practitioners of Ayush. Farming and medicinal plant cultivation and marketing are in the highest claimers in the world. Qualified Ayush educators are constantly in ultimatum positions. Last but not least, research in Ayush is growing and is creating opportunities throughout the globe. Thus, you can be a practitioner of Ayush, you can be a health advisor, you can be an entrepreneur, you can be a teacher, a researcher, and there are so many other ways that you can build up your career in Ayush system. Just as a last note, would like to end our presentation saying that it's time to adopt Ayush. It's time to be healthy and also to contribute in building a Swasthya Bharat. It's all about Hamaara Ayush, Hamaara Swasthya, and Hamaara responsibility to nurture and propagate this wonderful system of healthcare. With this note, would like to thank Government of India and Minister of Ayush for giving us this explicit opportunity to share Ayush system to the future generation of India. The Ayush event was possible due to the visionary sight of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We thank you very much, sir, wholeheartedly. Thank you, everyone, and thank you, everyone, once again. Thank you so much.
डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अजीज का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अध्यक्ष वैद्य जयंत देव पुजारी सर से कृपया अपने विचार हमारे समक्ष साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे परमादरणीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे आयुष के ही राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा, हमारे परमादरणीय सेक्रेटरी सर पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, हमको हमेशा सहायता करने वाले हमारे स्पेशल सेक्रेटरी श्री पी के पाठक सर जी, यहाँ पर उपस्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी और उनकी टीम, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। पूरे देश में ये बड़े धूमधाम से ये महोत्सव मनाया जाएगा, पूरे साल भर के लिए मनाया जाएगा, और इसकी एक शुरुआत आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, इसलिए इसकी शुरुआत जो है वह शुरुआती तौर के उद्घाटन के तौर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम सब जानते हैं कि ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम है, और साल भर हम विविध प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जनमानस तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। और आयुष मंत्रालय ने यह तय किया है कि वो विद्यार्थियों तक पहुंचे। विद्यार्थियों तक क्यों? विद्यार्थियों की अपनी एक महत्ता है इस देश में, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग ये युवा वर्ग है इस देश का, और आज हम जानते हैं कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में यदि अभी से उनको अवगत कराया जाए, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में अवगत कराया जाए, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है वो हमारे युवा वर्गों को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि रोग होने के बाद में उसकी चिकित्सा करना बहुत महंगा है। उसका जो अनुभव है आप सब लोगों ने देखा और सुना होगा इस कोविड काल में, और वैसे भी हम सब लोग देखते हैं कि आजकल बीमार होने के बाद में उसकी जो चिकित्सा है बहुत महंगी होती जाती है, और उसका सर्वोत्तम उपाय जो है ये हम बीमार न पड़े, और इसके लिए आयुष के जितने भी विधाएं हैं उसका बहुत ज्यादा उपयोग हम सब लोग कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बात है ये, हम समय पर उठते कि नहीं, हम समय पर खाना खाते कि नहीं, हम समय पर सोते कि नहीं, हम समय पर पढ़ाई करते कि नहीं, इन सभी चीजों का जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर होता है। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग, हम में से कुछ कॉलेज के भी विद्यार्थी होंगे, साल भर पढ़ाई करना और समय पर पढ़ाई करना, इसमें तनाव में जो अंतर आता है वो तो आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने भी अनुभव किया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आयुष के जो विधाएं हैं वो बड़ा महत्व देती है। जैसे क्या खाना चाहिए, इसके बारे में जो नियमावली है, मैंने एक कॉलेज में बहुत सुंदर प्रोग्राम का इनविटेशन देखा, उन्होंने स्लो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया था। अब मैंने उनको पूछा ये स्लो फूड क्या है, तो बोले फास्ट फूड का जो जमाना है उसमें ये जो खाना है वो बहुत जल्दी पकता है, और हम लोगों ने ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन किया है जिनको पकने के लिए समय लगता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। छोटी सी चीज है कि हम लोग खाना क्या खाते हैं, वो फास्ट फूड कितना है और स्लो फूड कितना है, इसका यदि संतुलन हम बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। जैसे और एक छोटी सी चीज है कि दांतों की सफाई, दांतों की सफाई का अपना एक महत्व आयुर्वेद में भी वर्णित है। उसके बारे में उन्होंने दांतों की सफाई के अलावा एक गंडूस नाम की चीज बताई है, जिसके कारण मुंह में तेल लेकर उसका कुल्ला करने के कारण जो मुख में एक स्वच्छता का आभास होता है, उसका जो अनुभव है आप सब लोगों ने करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम लोगों ने देर तक यानी काफी समय तक जवान दिखना चाहिए, इसके लिए सभी युवाओं की बड़ी इच्छा रहती है। अब लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये बुढ़ापे में करके कोई फायदा नहीं, उस समय की लिपापोती का अपना मर्यादित महत्व है। तो हमको यदि हमारी जो युवा अवस्था है वो दीर्घकाल तक रहे, ऐसे यदि हमको लगता है, हमारी शारीरिक क्षमता है, हमारी मानसिक क्षमता है, हमारी अन्य बौद्धिक क्षमता है, ये यदि कायम रखनी चाहिए, ऐसा यदि हमारे विद्यार्थियों को लगता है, तो मित्रों मुझे लगता है कि आयुष विधाओं का आप लोगों ने पालन करना चाहिए।
छोटी सी चीज है कि जब हमको किसी भी कारण से रात्रि जागरण से पढ़ाई के लिए हम लोगों का शरीर जब गर्म होता है, आंखें गर्म होती है, तो हम आंखों में ड्रॉप डालते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपने तलुओं को तेल लगाकर सोइए। उसके कारण जो आंख शांत हो जाते हैं, दूसरे दिन आपको अच्छा लगता है, आंखों पर का तनाव कम होता है। इसकी जो अनुभूति है आप लोगों ने, मेरे मित्रों ने, युवा वर्ग ने कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम जानते हैं कि आयुर्वेद में कई दवाइयां बाजार में भी मिलती है स्मृति वर्धक। लेकिन स्मृति का वर्धन ये तो एक अलग विषय है। ब्राह्मी पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, अभी रिसर्च की बात चल रही थी प्रेजेंटेशन में, और हजारों रिसर्च पेपर इसके ऊपर हम लोग नेट पर देख सकते हैं। मैं हमेशा बीच बीच में देखता हूँ, तो गुरुची पर करीब करीब 11,000 पेपर दिखे थे, अश्वगंधा पर भी 11-15,000 पेपर दिखे थे। तो आप कोई भी प्लांट का बोटेनिकल नेम पबमेड पर डालिए या गूगल पर डालिए, आपको उस विषय पर, उस वनस्पति से संबंधित, उस विधा से संबंधित आपको कई हजार पेपर आज नेट पर मिल जाते हैं, जिसको पूरा पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य ऐसा है कि ये रिसर्च के विषय में भी आयुष जो है वह काफी आगे बढ़ चुका है। अभी पहले लोग बोलते थे कि आयुष में अपने संशोधन की, रिसर्च की जरूरी है, लेकिन जो हुआ रिसर्च है उसको भी हम लोगों ने एक बार देखना चाहिए। और आपके मन में कुछ भी शंका होती है किसी भी चीज पर, तो ये व्हाट्सएप पे आई हुई जानकारी पर निर्भर न रहते हुए उसके बारे में जो शास्त्रीय जानकारी हमको रिसर्च पेपर के द्वारा जो उपलब्ध होती है उसको हमको देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आयुष के एजुकेशन में भी अभी नई एजुकेशन जो पॉलिसी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, उसके आधार पर आयुष की शिक्षा में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वह प्रोसेस में है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस का निर्माण कुछ हद तक हो चुका है। टीचर्स ट्रेनिंग की जो विधा है वह शुरू हो चुकी है, और ऐसी कई इनिशिएटिव जो है वह नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये शिक्षा से संबंधित जो आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लेना शुरू किया है। और मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले दिनों में आयुष की शिक्षा का जो स्तर है वह आपको निश्चित रूप से बढ़ा हुआ मिलेगा। और आप में से जिनकी इच्छा है और जिनकी इसमें रुचि है, जिनका इसमें एप्टीट्यूड है, उन लोगों ने इसका लाभ जरूर लेना चाहिए और उसका विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिशः लगता है। फिर से मैं खान पान पर आता हूँ। अभी आयुष मिनिस्ट्री ने खान पान के बारे में बहुत सारे डिटेल जानकारी, उसका एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने बहुत उसका गहन अध्ययन करके उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं, और वो आयुष की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वो आप सब लोगों ने निश्चित रूप से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारी पूरी मिनिस्ट्री, हमारे मंत्री महोदय, हमारे सेक्रेटरी महोदय, ये हमेशा इसकी प्रगति के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और इसके जो फल है वो आज हमको देखने को मिलने लगे हैं। इसलिए मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये सब जो प्रगति है अलग अलग क्षेत्र में की, वह संभव नहीं है। ये कोविड के दिनों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाओं ने जो कार्य किया, रिसर्च के बारे में किया, जितना डेटा जनरेट किया, वो बहुत सराहनीय है। उसके लिए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ये कार्य किया। और मेरी हमारे विद्यार्थी मित्रों से भी प्रार्थना है कि यहाँ जो कोविड के बारे में जो आयुष के जो इनिशिएटिव थे उसकी भी जानकारी आप लोगों ने रखना चाहिए। वो सिर्फ आयुष काढ़ा यानी आयुष नहीं है, सिर्फ गुरुची खाना यानी आयुष नहीं है। इसका पूरा जो पैकेज है, जिस प्रकार से इसका विचार किया गया है, उसके बारे में आप सब लोगों ने जानकारी रखना चाहिए और उसका अपने जीवन में उसका अमल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का फिर से एक बार यहाँ पर स्वागत, और मुझे विश्वास है कि हम पूरे साल भर साथ में रहेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इस महोत्सव को मनाएंगे, क्योंकि ये अपने सभी, हर नागरिक का ये महोत्सव है और हम सभी लोगों ने इस पर शरीक होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद माननीय, आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए
मैं निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर तनुजा नेत्री से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं जो हम करने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में हमें परिचय दें। नमस्कार, am I audible? You are audible. Yes, thank you. आज के कार्यक्रम में जुड़े हर कोई महानुभाव और आज का कार्यक्रम जिसकी टैगलाइन है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य, जो मिनिस्ट्री के सभी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध होम्योपैथी सभी एक साथ आके एक बहुत सराहनीय प्रयास जो शुरू किया है, सभी काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ ISM और सभी काउंसिल्स और सभी इंस्टीट्यूशंस ने मिलके एक आयुष के ऊपर एक पूरे हर इंडिया के 125 करोड़ देशवासियों को आयुष की स्ट्रेंथ को बताने का एक जो मिशन मोड पे ठान लिया है। इन सब में सहभागी हम सबसे शुरुआत हम माननीय मंत्री जी डॉक्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई जी एंड हमारे सेक्रेटरी सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी, उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज कार्यक्रम की जो एक स्टैंडर्डाइज आपने देखा होगा, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अजीज ने एक बहुत ही सुंदर शानदार प्रेजेंटेशन किया, तो इसमें ये तय किया है कि एक स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन, एक स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल प्रेजेंटेशन हम हर किसी को शेयर करेंगे, हर एक कॉलेज को शेयर करेंगे, जिसमें लीड लिया है ये प्रेजेंटेशन बनाने में आयुष के सभी भागीदार जो है, सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलके एक अपनी स्ट्रेंथ को जताते हुए एक प्रेजेंटेशन बनाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के जो हमारे अध्यक्ष हैं वैद्य जयंत देव पुजारी जी, डॉक्टर BV प्रसाद और डॉक्टर खुराना और सभी होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और सभी योग, इन सब के जितने भी काउंसिल के और NI के हेड है, इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के मेरे कलीग डॉक्टर उमेश तागड़े, डॉक्टर प्रमोद और बाकी मीना एंड ऑल द डीन्स, प्रोफेसर सुजाता कदम, महेश व्यास और सभी ने मिलके एक प्रेजेंटेशन बनाया है। इस प्रेजेंटेशन को जो आजादी के 75 साल में 75,000 स्कूलों में, पाठशालाओं में, हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल और सेकेंडरी लेवल पे हम इसको हर किसी को आयुष की जो स्ट्रेंथ है, जो अभी आपने देखा कि प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड इट इज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरापेटिक, प्रोफिलैक्सिस, रिजुवेनेटिंग, जिसका एक उत्तम उदाहरण हमने कोरोना में भी देखा था। So with these strengths would be communicated. First important thing is to create an awareness. लोगों को पता चले कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये आर फ्यूचर टॉर्च बेयरर्स एंड जो यंगस्टर्स है, दे विल कम्युनिकेट दिस मैसेज। तो उनके पास हमारे शालेय विद्यार्थी जो अभी जुड़े हैं, एंड वी आर सो प्राउड एंड सो हैप्पी दैट मेनी स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ 75 institutions across India who have with whom this live link has been shared, which includes from Bhopal Umesh Shukla ji hai, Sushruta College hai, and many national institutions के director भी इसमें हैं, and various schools से हम ये link भी share करें, और जो passively हजारों विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, आयुष के देख रहे हैं, इन सबको प्रणाम और शुक्रिया कि आप इसमें जुड़ गए। तो ये 75,000 स्कूलों तक पहुंचना ये हमारा टारगेट है भारतवर्ष के, ऑल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बट इनिशियली टू बिगिन विथ द टारगेट इज टू रीच, टू स्टार्ट विथ 7,500 schools. So how do we will achieve it? We'll approach to each and every teaching institution across India, and each institution will give the training to 100 schools around their near vicinity, और 100 schools की जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स को ये हम एक स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल, देयर इज अ स्ट्रेंथ इन अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज। अगर एक ही लैंग्वेज में, जैसे अभी देव पुजारी सर ने कहा और हमारे बाकी भी अध्यापकों ने कहा, प्रेजेंटर्स ने, कि अगर खान पान सुबह जल्दी उठने से लेके शाम तक क्या खाना है,
what is व्यायाम कैसे करना, what is to be taken, when it is to be taken, नींद 6 से 8 घंटा लेना, सोच कैसी हो, how should be the supplement which are very important for maintaining the health, wellness. How do we create wellness and happiness? How from illness the wellness is achieved, which leads to the happiness. What is the holistic strength of this health and this knowledge system of health and happiness, happy lifestyle? तो ये अगर बच्चों तक पहुंच गया और छोटे छोटे औषधि पौधे जो इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, जो हमारी धरोहर का हिस्सा है, what is the science behind all these medicinal plants, what are their health benefits, तो ये सभी चीजें इंतर्भूत करते हुए ये टीचिंग मॉड्यूल होगा. A good news to each and every student is that ये जो नॉलेज उनके पास 75,000 स्कूल्स के बच्चों के पास जाएगा, उन सबको ई सर्टिफिकेट मिलेगा. तो ये ई सर्टिफिकेट से आप सर्टिफाइड जो ई लर्निंग का जो अपना है, वो ट्रेनिंग का आपका एक सर्टिफिकेशन है, वो कहीं जाके आपको ये काम भी आएगा. और आयुष चिकित्सा पद्धति ये हमारा पब्लिक हेल्थ का, कम्युनिटी हेल्थ का हिस्सा है, हमारे धरोहर का हिस्सा है. वी शुड बी रियली फीलिंग प्राउड एंड इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड द सॉफ्ट पावर फ्रॉम इंडिया टू अक्रॉस द नेशन एंड टू द एंटायर ह्यूमैनिटी. जो कोई इसको पढ़ेगा, जो सर्टिफाई करेगा, उसको अपने आप को एक प्राउड फीलिंग होगा, वो आगे जाके और लोगों को इसके बारे में, आयुष के बारे में बताएगा. आई थिंक इट इज अ ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहा तो चलो. दिस इज द मैसेज we would like to be, and how it is a very structured program. Initially 705,000 schools, each each college will target 100 schools, and then it would become 75,000 within this Azadi Ke Amrit Mahotsav. It is not only training, like how it has been imbibed, how it has been received by all the students and the scholars, young torch bearers, future citizens of India. How we will assess? हम स्लोगन कंपटीशन रखेंगे, डिफरेंट लेवल की कंपटीशन रखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि बच्चों ने कितना अवगत किया है. प्लांटेशन ड्राइव इन ईच स्कूल would be already is initiated, and medicinal plants would be provided, made available by National Medicinal Plant Board under Ministry of Ayush. और जो खान पान की व्यवस्था है घर में, जो फास्ट फूड का जमाना, स्लो फूड का, लेकिन हेल्दी फूड जो हमारे दादी माँ नानी माँ के नुस्खे हैं, वही आयुर्वेद आयुष का नुस्खा है. उसका साइंस, हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव होलसम एंड हेल्दी फूड which leads to our mental, emotional and intellectual growth as well, along with the physical. वो happiness के लिए कितना important है, mental balance के लिए कितना important है, बच्चों तक इसका knowledge ले जाना is our mandate. और इसमें हर कोई जुड़ा हुआ है. जो जितने celebrities की बात अभी मैडम अर्चना जी ने की, the greatest ambassador, जो greatest इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ही इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर. मन की बात में 4-5 बार, हर बार वो आयुष की जो स्ट्रेंथ है उसको अपनाने में 125 करोड़ देशवासियों को स्वस्थ रखेंगे तो स्वस्थ भारत, सशक्त भारत हो सकता है. और हम एक आत्मनिर्भर बनते हुए एक दुनिया के सामने बड़ी ताकत लेके जा सकते हैं. और मेन स्ट्रीमिंग में हमारे अगर बीमार ही ना पड़े, हम हेल्दी ही रहे, इसमें उसका महत्व बहुत बड़ा रहेगा. So united we can do many things than anyone else can, and this is the first time that under the umbrella of Ministry of Ayush, all Ayush systems, because the method may be different, but the approach is the same as a preventive, promotion and therapeutic and the holistic and integrated health. So it's the great and noble cause to reach to the masses, to reach to the youngsters. अगर वो sensitize होंगे तो वो पेरेंट्स सेंसिटाइज होंगे. टीचर ऑफ द स्कूल हैज to play a great role. If they are sensitized, I think they can sensitize the future generation, and that would really help everyone to be healthy and to keep healthy, everyone. And when the nation is healthy, the productivity, economic growth and everyone, I think वो सशक्त सक्षम भारत के लिए ये बहुत बड़ा पहल होगी आजादी के 75वें साल में.
सो आइए सब मिलके हम स्वस्थ भारत के लिए आयुष को इंटीग्रेट करें, अपनी ओन धरोहर, अपना ओन धरोहर उसका सम्मान करें। यही हमारा आप देश का सम्मान होगा, हमारा धरोहर का सम्मान होगा। लेट अस जॉइन हैंड टुगेदर। और लास्टली इतना ही हम कहेंगे कि जैसे महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, माय एक्शन इज माय मैसेज। सो लेट ऑल यूनाइटेड एक्शन in the teaching promoting of all united Ayush stream and Ayush faculty who have joined in this entire noble cause be our message to the entire world for making Swasthya Bharat, Sashakta Bharat, Samruddha Bharat. Namaskar, this was the plan starting from top to the down and targeting to the students and everyone to do. और हमारा टारगेट 75,000 स्कूलों का है। सब लोग जुड़ गए तो हमें लगता है 75 लाख स्कूलों को भी कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, बहुत बधाई इसमें जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये शुरुआत है और हम आगे ले जाएंगे और आप सभी इसी में जुड़ जाएंगे। एवरीवन विल गेट सम ऑफ द रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशन होगा और बहुत अच्छे अच्छे प्राइज भी मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम की गतिविधियां और श्रोताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सभी ने जो प्रेजेंटेशन किया था, सभी श्रोतागण उन्होंने सुना है इस प्रेजेंटेशन को, और निश्चित ही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयुष की जानकारी आप जन जन तक पहुंचाने में सक्षम होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस क्रम में आगे ले जाते हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्कूल के प्राचार्य, अध्यापक और छात्र, तो एक हमने इंटरैक्टिव सेशन का इसमें रखा है और इसमें आप अपने प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास एक पैनल है, जो एक्सपर्ट पैनल में वैद्य जयंत देव पुजारी, डॉक्टर अनिल खुराना, वैद्य तनुजा नेसरी, वैद्य बीआर प्रसाद, डॉक्टर तारकेश्वर जैन, प्रोफेसर महेश व्यास और डॉक्टर अर्चना है हमारे साथ। तो हम क्रम की शुरुआत करेंगे राज्यों से। सबसे पहले दिल्ली राज्य से अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है आयुष के विषय में, वो पूछ सकता है। दिल्ली से हमारे पास एक प्रश्न प्राप्त हो गया है। प्रश्न है, आयुष डॉक्टर प्रमोद एंड सभी को हम ये बताना चाहेंगे, हर एक स्टेट के एक कोऑर्डिनेटर है, which we इस कड़ी में coordinator, so coordinator also can communicate our message. Yes. Any question? एक प्रश्न प्राप्त हुआ है दिल्ली क्षेत्र से हमें। प्रश्न ऐसा है कि जो आयुष की दवाइयां हैं, इनसे जल्दी आराम नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो मैं वैद्य जयंत देव पुजारी सर से निवेदन करूंगा कि कृपया इस प्रश्न के ऊपर अपने विचार हमसे साझा करें। Professor Tanuja Nesri ma'am, would you like to answer the question? Can you please repeat the question? मैम, ऐसा प्रश्न आया हमारे पास दिल्ली क्षेत्र से, इसमें कहा जाता है कि आयुष की दवाइयां, इनसे जल्दी आराम नहीं मिलता है। आयुष की दवा से जल्दी आराम नहीं मिलता, दे आर नॉट फास्ट एक्टिंग। नो, ये मैं बहुत इसके लिए मैं जरूर उसका आंसर दूंगी कि कोरोना में आयुष का एक दवाओं का एक थोड़ा एक मिसकंसेप्ट ये था कि आयुष एक केवल क्रॉनिक डिसीज के लिए होता है, लेकिन कोरोना में आप देखा होगा कोविड में 10 दिन में जैसे कोविड में किसी को आराम हुआ, तो आयुष की दवा जिन्होंने ली उनको 3 या 5 दिन में ही आराम मिला। कम्युनिकेबल डिसीजेस में भी आराम मिला। तो अचूक निदान
अगर डॉक्टर से वैद्यकीय सलाह के अनुसार आप करेंगे और होलिस्टिकली आप उसको केवल आप जैसे वैद्य देवपुजारी ने कहा था काढ़ा और आयुष काढ़ा और आयुष पद्धति, ऐसा नहीं, वो होलिस्टिक है। खान पान और इसके साथ अगर आप देंगे तो अचूक निदान के बाद आपको तुरंत आराम मिलता है। मतलब एक ये गैर समझ है, मिसकम्युनिकेशन है। आयुष से भी तुरंत उतना ही आराम मिलता है। सर दर्द है 2 घंटे में कम होता है, बुखार है 2 घंटे में कम होता है। ऐसा हमने ऑल इंडिया में नहीं, पूरे देश में कोविड में देखा है। थैंक यू सो मच मैम। मैं आशा करती हूँ कि मैम ने जो जवाब दिया है उससे आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई होगी और दैट विल बी सेटिस्फाइंग फॉर यू। अब मैं आगे बढ़ते हुए देखिए निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या मध्य प्रदेश से हमारे लिए कोई प्रश्न है? क्वेश्चन फ्रॉम मध्य प्रदेश। अब मैं आगे बढ़ते हुए निवेदन है कि कृपया अपना माइक जो है कि वो म्यूट कर लें और जिस प्रदेश का नाम लिया जा रहा है कि उसी प्रदेश के लोग सभी से निवेदन है। Okay, we have received one question from मध्य प्रदेश जिसमें ये पूछा गया है कि आयुष दवाइयों के कोई दुष्परिणाम नहीं होते, क्या ये सही है? तो मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर व्यास सर से कि वो इस क्वेश्चन का जवाब प्लीज इन्हें दें। देखिए आयुर्वेद की जो औषधियां बताई गई है, अगर उनका प्रॉपर लेने जो नियम बता रखे हैं, जिस मात्रा में लेना है, जो औषध सेवन काल बता रखा है, इन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो कई बार औषधियों के दुष्परिणाम होते हैं। ये औषधि के दुष्परिणाम नहीं है, ये खासतौर से जो सेवन के नियम है उनका परिपालन सही नहीं किया गया। तो आयुर्वेदिक औषधियां जो है, प्रायः आयुर्वेदिक औषधियां इस प्रकार की है कि कई औषधियां जो आहार के रूप में भी हम सेवन करते हैं उनके द्वारा औषधियां बनती हैं। और आयुर्वेद में कहा जाता है देश जो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला उसी क्षेत्र में जो औषधियां उत्पन्न होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रायः निरापद है, इनमें दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। लेकिन अगर सही डायग्नोसिस, सही औषधि का चयन, सही मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाए तो दुष्परिणाम बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। आगे मैं चाहूंगी कि राजस्थान प्रदेश से यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो वो प्लीज पूछिए। आगे मैं चाहूंगी कि सभी लोगों से निवेदन है कि अपने माइक को म्यूट रखें। जिन्हें सवाल पूछना है सिर्फ वो अनम्यूट करें, एक एक करके करिए। इट्स अ रिक्वेस्ट कि स्टेज से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही अपने माइक को अनम्यूट करें एंड द रेस्ट आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली म्यूट देयर माइक फॉर द अनइंटरप्टेड सेशन। Do we have any more questions from Madhya Pradesh? गुरुकुल सोलन में तो हिमाचल प्रदेश में है ना सर। Good afternoon, everyone. My question is that if I pursue homeopathy, what are my career options? Okay, the question is she pursues homeopathy as a career option. What is the option? So I would like to request Dr. Archana ma'am to kindly answer this question. निवेदन है कि अपने माइक म्यूट कर लें क्योंकि हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब देने वाले हैं। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए होम्योपैथी में जब आप एडमिशन लेंगे नीट के थ्रू एडमिशन होगा और अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है 5.5 साल का होता है, BHMS कहते हैं।
उसके बाद जो है वो आप एमडी में एडमिशन ले सकते हैं और फर्दर पीएचडी का भी ऑप्शन रहता है। एज अ होम्योपैथ आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज है करियर की। आप जो है वो कॉलेज और अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस के अंदर एज ए टीचर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर स्टेट के अंदर जो है अपनी लोकल डिस्पेंसरीज होती है जहाँ पर कि आप मेडिकल ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्लिनिक जो है वो सेटअप कर सकते हैं और एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर आप काम कर सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र की बात करेंगे तो जितने आपके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स है वहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च की बात पहले भी डॉक्टर अजीज ने की थी अपनी प्रेजेंटेशन में। हमारी रिसर्च काउंसिल है जहाँ पर कि इमेंस अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है। आप रिसर्च करते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, स्किन क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर कि आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग द होम्योपैथी। तो इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में, ना सिर्फ होम्योपैथ के लिए बल्कि सारे ही आयुष सिस्टम के प्रैक्टिशनर्स के लिए। We can see some questions in the chat. So, there is a question from Karnataka. आयुष पद्धति में संशोधन क्या होता है? आप चलिए आराम से बैठा फिर ही अलाउ है नहीं बाकी नहीं मजाक नहीं करता। सभी से निवेदन है कि कृपया अपना माइक जो है वो म्यूट रखें और आपकी बारी आने पे ही अपने सवाल को पूछें। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा कर्नाटक राज्य से किसी को कोई प्रश्न है या वहाँ के कोऑर्डिनेटर है वो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। बाकी सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट रखें। Okay, we have received a question from Karnataka कि आयुष पद्धति में संशोधन क्या होता है, and I request Dr. Prasad sir to kindly address this question. Let me compliment all of you for taking part in the historical event. We're very fortunate to be part of this Ayush Hamaara also and Hamaara Ayush Hamaara Swasthya. I compliment the student who asked the question also. They're having a research insight, a good question. And definitely, I think you can have seen the presentation by Dr. Rajiv and Dr. Archana that have shown more than 120 US studies are going on, more than COVID itself. That indicates what the activity is going on in the Ayush system as part of the research. And the Ayush Research portal, there are more than 32,000 publications are available on that month. This is how the outcomes are there. So each system has its own research council. For example, Ayurveda, CCRAS is there. Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. CCRAS for homeopathy. CCRAS for Siddha. Like the CCRAS for Unani. Like the each system, right? Its own research council are there. So everywhere there is activity going on, and this outcome is what are the scientific temperament in the systems and how the outcomes is there. Definitely, the lot of research is going on our system, and evidence-based medicine is coming up, and we are reevaluating all the age formulations that we done there. Lot of change is being done there. Definitely, this is going on our system, and this is evidence-based medicine and the scientific system it is. I think I'm clear. Thank you, sir. Thank you, sir, for clarifying this doubt. Now, UP,
उत्तर प्रदेश राज्य से यदि किसी को इस विषय में कोई भी शंका हो तो अपना सवाल वहाँ पे पूछ सकता है हमारे एक्सपर्ट पैनल के सामने। Good morning. I'm from New Era Senior Secondary School, Gujarat, and I had this question that suppose in the case of cancer patients, so cancer is a disease which is incurable, and patients को extremely high costs वाले treatment कराने पड़ते हैं, and we all know that homeopathy, any kind of homeopathy treatment. Any kind of homeopathic treatment takes a long time, around even it takes months and years. It's not even available everywhere. So I wanted to know कि ऐसे incurable diseases के कैसे भी homeopathic treatment होती होगी, like cancer. Thank you very much for asking this question from New Era School. We are delighted to know that you have taken enthusiastic participation in this program. May I request Dr. Archana to kindly answer this question? जब हम होम्योपैथी या आयुष की बात करते हैं और जब हम कैंसर जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं तो कैंसर जो है वो कोई एक दिन में डेवलप हुई बीमारी नहीं है। तो जब हम किसी गंभीर या पुरानी बीमारी की बात करते हैं तो उसकी चिकित्सा में भी ज्यादा समय लगता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैंसर की कौन सी स्टेज है जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आया है और उसके क्या क्या जो है वो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं। तो हमें ये सारी बातें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं और आपको मालूम है कि जहाँ पर बीमारी बहुत पुरानी होती है या गंभीर होती है तो उसके उपाय जो है वो आयुष सिस्टम में हम जड़ से खत्म करने की बात करते हैं तो समय लगता है। दूसरी बात, जहाँ तक कैंसर की बात है, कई बार ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम इलाज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम पेलिएट करते हैं, यानी कि कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट परेशान हो रहा है। मान लीजिए पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, भूख कम लग रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, तो हम इन चीजों को भी ध्यान में रख सकते हैं। जो ट्रीटमेंट किसी भी पद्धति में है, चाहे वो आयुष की किसी भी पद्धति की आप बात कर लीजिए, सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, आयुर्वेदा की बात है, यूनानी की बात है, हम कैंसर की एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योर हर केस में नहीं किया जाता, कुछ केसेस में जो है वो पैलिएशन करना पड़ता है और फिर बाद में रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें आते हैं। तो सिस्टम जो है वो कैंसर के अंदर सिर्फ क्यूरेटिव ही नहीं, पैलिएटिव और रिहैबिलिटेटिव भी एक काम करता है। तो मेरे ख्याल से जो है वो क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि डॉक्टर अर्चना के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ते एक और प्रश्न है। ये प्रश्न महाराष्ट्र राज्य से यदि कोई मुझे है। Sir, good morning. Yes, you're audible. I'm Miss Dhanigona Dute from Oxford Public School, Mumbai, Maharashtra. Yes, you can continue. Am I audible now? Yes. Yes, sir. Thank you. I'm Dhanigona Dute from Oxford Public School, Mumbai, Maharashtra. My question goes as आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी के लिए स्कूल के समय से ही शिक्षण पद्धति ने इसका अंतर्भाव क्यों नहीं किया जा रहा है और यह कब तक हो सकता है? Very good question from Oxford Public School. We are delighted to have your question. The question is कि स्कूल की शिक्षा पद्धति में आयुष के बारे में जो जानकारी है उसका अंतर्भाव हम कैसे कर सकते हैं या कब हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर BS प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि कृपया इस पे अपने विचार रखें।
It's a good question, good thought also. You will go back India also thinking the same lines. I think you may be knowing the NGP, National Seed Policy 2020, recently. There's several issues are there. It also taken a lot of interest on the how we can think all systems are there. This is thinking that when you orientate the students at the younger age, definitely they will inculcate good habits. Where we have shown the village area, daily regimen, some the code of conduct we have shown. Likewise, these principles teach the younger generation, young age itself. Then they develop the good habits, a good healthy lifestyle they develop. That is the main intention is there. And also, they know what kind of systems are there. This is a good idea. And already Homeopathy is thinking that one education is going to implement at different stages, different levels. We implemented shortly. Along the NGP is going to come there. You are all going to get educated very shortly. Thank you, sir, for providing the answer, and I am very much hopeful that young students know about Ayush and pursue academic. Moving ahead, Uttar Pradesh. Good afternoon, sir. This is Navodaya. Student wants to ask some questions. आप कहाँ से हैं बताइए प्लीज पहले. सर जवाहर नवोदय विद्यालय रातीगढ़ भोपाल. जवाहर नवोदय विद्यालय रातीगढ़ भोपाल. अपना सवाल पूछिए. सर हेमोपैथी दवाइयों का हम बच्चे पर क्या फायदा है और क्या क्या उपयोगी है? आप प्लीज कृपया अपना क्लियर सवाल पूछिए. मास्क हटा के एक बार पूछिए. सर हेमोपैथी दवाइयों का हम बच्चों के लिए क्या उपयोग है? होम्योपैथी मेडिसिन का चिल्ड्रंस के लिए यूज क्या है? डॉक्टर तारकेश्वर सर प्लीज प्रोवाइड योर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन. सभी को मेरा नमस्कार. आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही पर्टिनेंट है और चूंकि ये प्रोग्राम हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं तो होम्योपैथी का बच्चों की बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है और बच्चों की इम्यूनिटी पावर वैसे ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और अगर शुरू से ही वो होम्योपैथिक दवाइयाँ लें तो ये मान के चलें कि उनको आगे जाके बहुत कम समस्याओं से परेशान होना पड़ेगा. अगर शुरू से ही वो होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं या आयुष मेडिसिन लेते हैं तो इनकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी बनी रहेगी, स्ट्रांग बनी रहेगी और आगे जाके उनको जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हमको होते हैं उनसे बहुत हद तक बचाया जा सकता है. बच्चों में होने वाली जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी या और जो बच्चों की बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, अगर शुरू से ही होम्योपैथिक औषधियों को लिया जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बच्चे के जन्म होने के बाद या जब बच्चा होता है इन्फेंसी के टाइम से अगर होम्योपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल किया जाए तो ये निश्चिंत मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी न केवल स्ट्रांग बनी रहेगी बल्कि आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से बच सकते हैं. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. एटोपिक डर्मेटाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में होती है. अगर इसको सही रूप से ठीक नहीं किया जाए, अगर इसका इलाज सही ढंग से नहीं हो, अगर इसको दबा दिया जाता है तो आगे जाके यही अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है और आगे जाके और कई बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है. लेकिन अगर शुरू में ही ऐसी बीमारियों का अगर होम्योपैथी से इलाज किया जाए तो न केवल ये पूर्णतः उस समय ही ठीक हो जाता है बल्कि आगे जाके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से अस्थमा से बच सकते हैं. तो मेरा तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि बचपन से ही होम्योपैथी को अपनाएं, आयुष पद्धतियों को अपनाएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करें तो आगे जाके आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों से बच सकते हैं. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. Can I ask a question? Please, I request you to please mute. क्या हम की दवाइयाँ बिना चिकित्सा के ले सकते हैं और मैं इसके लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पीएस प्रसाद सर को जो कि आपने विचार रखे इस पे.
question is whether medicine taken without prescription of doctor. Definitely not, because medicine is a medicine. It is good ये आयुष का प्रोग्राम चल रहा है Always I request everyone to take their medicine without medical doctors, qualified doctors. It's a must take. Except it's not every age, it's different. So we have to take medicine without doctor. मैसेज डालो Do we have any more questions? Good afternoon, everyone. I am Shrifti Roy from Dr. D.Y. Patil Public School, Pimpri, Pune, Maharashtra. My question is, will there be any future prospects to career in homeopathy in Maharashtra? In Maharashtra government? For the homeopathy, we have the chairman of homeopathy. अभी इससे पहले भी डॉक्टर अर्चना ने कुछ कैरियर ऑप्शन बताए थे। आप स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के बारे में पूछ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स और या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना ये स्टेट गवर्नमेंट का कार्य रहता है। अभी आने वाले दिनों में कुछ होम्योपैथिक कॉलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ओपन होने वाले हैं, तो वहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता रहेगी, लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स। तो कैरियर ऑप्शन में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज जब खुलती हैं तो वहाँ भी मेडिकल ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर्स के नाते भी वहाँ जॉब के ऑप्शंस रहते हैं। अभी बहुत जगह पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी जॉब करने की परमिशन मिल गई है और वो वहाँ पर वो सिलेक्ट भी होते हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, मेडिकल इंश्योरेंस की जो बातें रहती हैं वहाँ पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो उस जॉब्स के अंदर भी रहते हैं। रेलवेज का सेक्टर है, ऐसे अन्य कई सेक्टर्स हैं जहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नौकरी जॉब मिलती है। इसके अलावा कितने कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर भी उनकी जॉब्स की ऑप्शन उनके पास रहती हैं। मेरे ख्याल महाराष्ट्र में सबसे अधिक होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं जहाँ पर टीचर्स लेक्चरर्स की जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनके सामने रहती हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं जहाँ पर होम्योपैथिक करने के बाद वो कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. This question is from morning class in Texas. We want to ask कि आजकल जब बहुत छोटे-छोटे बच्चों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन नहीं होने की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो is there no medicine for them जो कि स्ट्राइड जिसमें स्ट्राइड नहीं हो और जिसमें केमिकल्स नहीं हो जो कि बच्चों को दे सके? Is there no medicine? Thank you for asking the question, and I will request Professor Vyas sir to kindly answer this question. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो मेडिसिन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या फिर कहने का मतलब है कि वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त नहीं हो तो उन मेडिसिन का अगर प्रयोग किया जाए तो स्वास्थ्य से रक्षा के लिए उतना जो योगदान ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक औषधियां जो है चाहे वो हर्बल मेडिसिन है तो ये मेडिसिन बिल्कुल हर्बल से बनी, इसमें कहीं कोई केमिकल या इस प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है जो स्वास्थ्य के ऊपर किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट करे। और इवन यहाँ तक कि कोविड की कंडीशन में भी चाहे हमने गिलोय का प्रयोग किया, अश्वगंधा है, मुलेठी है, पिपली है, ये सब ऐसे प्लांट है कि जिनका प्रयोग करने पर किसी प्रकार का कोई जो कहना चाहिए इसके ऊपर जो साइड इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आयुष सिस्टम की जो मेडिसिन है वो अधिकतम मेडिसिन जो है वो इस प्रकार से सेफ है
और उनका प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है छोटे बच्चों से बड़ा बच्चे बड़ा करने और जैसा कि पहले कहा था कि हमेशा कोई भी मेडिसिन सुपरविजन लेना चाहिए किसी के साथ भी काम लेना चाहिए अपनी इच्छा से उनका प्रयोग नहीं करना obviously children you know, exercise, so you put all habits are there. So this is the main process of they go to exercise that. The reason I am not when we give the presentation, we put this area. And even exercise, that's I do this after Hope your question has been answered correctly. And due to the time limitation, this is the last question that we will be taking from Dr. Jyoti Mal. Dr. Jyoti Mal, you can ask your question. Yes, sir. I am Dr. Jyoti Mal. Please, my student, she will ask some question. Myself, Sheila Shri. I am from Ayush. How can we prevent disease from homeopathy? For answering this question, I request Khurana sir. Can you please repeat your question? How can you prevent what? You are requested to Myself, Sheila Shri. I am from Vaikil High School. How can we prevent disease from homeopathy, sir? Okay. You are asking in general way how can you prevent disease? That is what you are asking. Yes. Okay. Good. From homeopathy. Yes. See, अभी दो तरह की बीमारियां होती हैं. एक तो एपिडेमिक नेचर की आती हैं महामारी के रूप में, जैसे आजकल कोविड चल रहा है. उसके लिए होम्योपैथी में निश्चित दवाई का एक एडवाइजरी इशू किया जाता है जो आप सब ले सकते हैं, जिससे आप उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं उस बीमारी से. जैसे इस बार कोविड के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 सजेस्ट की गई थी, जो हर 21 दिन बाद आपको रिपीट करनी है. तो उसमें भी हमारा शोध भी हो गया और उन्हें वैलिडेट भी किया कि आप आर्सेनिक एल्बम अगर हर 21 दिन बाद रिपीट करते रहते हैं तो आप उस महामारी से 80% तक चांस है कि आप बचे रहेंगे. इसी प्रकार बाकी एपिडेमिक्स होते हैं उनके लिए भी, लेकिन इन सबके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से शुरू से ही अपना के रखना. और जैसे डॉक्टर तारकेश्वर ने बताया कि अगर आप बिल्कुल शुरू से होम्योपैथिक तो आपकी इम्यूनिटी एक अप लेवल पर रहती है, तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं. जैसे उन्होंने बताया कि आप टॉन्सिलाइटिस है, स्किन की बीमारी है, शुरू से अगर होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो आप एक क्रॉनिक बीमारी जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा आप इससे बचते हैं. तो ये बहुत लाभ है कि होम्योपैथी चिकित्सा से आप बहुत सारी, जैसे आपकी फैमिलियल टेंडेंसीज होती हैं, आपकी हेरिडिटरी टेंडेंसीज होती हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ बीमारियों को लेकर, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था डायबिटीज को लेकर. तो जहाँ आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप शुरू से ही होम्योपैथिक दवाई पर अपने को रखते हैं तो बहुत हद तक ये चांस है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी. इन्फेक्शन से भी आप अपने को बचा सकते हैं. Thank you, sir. हमें खेद है इसमें एक्सपर्ट लेवल का बहुत जुड़े हुए छात्रों की संख्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए. Good afternoon, sir. I'm Siddhartha from Untitled. Due to the time limitation, we cannot take more questions. However, if you have any queries, you can contact your nearest Ayurvedic college for getting them resolved.
And moving forward, I would like to humbly welcome our guest of honor, Dr. Munchpara Mahendra Bhai ji, to kindly address this program with his blessings. Dear students, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has very often said his vision of building a new Atmanirbhar Bharat. You are also aware that our great nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Commemorating this monumental occasion, a series of activities called Resurgent Atmanirbhar Bharat are planned by the Ministry of Health. Some of the activities are planned to educate students from various streams. The vision is to inspire the young generation to be healthy, energetic, and happy. Our students can play a vital role in society. What is being shown today is what shall be reaped later. Education plays a vital role in shaping mind. Our culture and traditions are being accepted by many countries across the world. Our customs and traditions of India are very diverse and deep. Our tradition wisdom of healing is also being widely accepted. Ayush system include Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Swarita, and Homeopathy. Our traditional healthcare is fully functional with network of qualified registered practitioners, research institute, and licensed pharmacists. The description of well-established disciplines of clinical medicine is unique feature of Ayurveda that covers comprehensive information on internal medicine, surgery, ophthalmology, otolaryngology, pediatrics, psychiatry, toxicology, and geriatry. All aspects of health and well-being are covered in it. Eye system advocate a number of simple practices that will maintain health and healthier family. The daily regime should be practiced in order to maintain connection to circadian rhythm of the nature. Current fast-paced social norms keep us disconnected from the nature. While through the eyes practice, we can deepen our root back to nature and re-establish connections with our authentic selves, while still enjoying the comforts and pleasure of 21st century. It is interesting to observe the traditional customs that are similar to pandemics of present scenario. The modes of transmission of disease through the skin contact, air pollution by exhaled air from infected persons, sharing of the infected clothes, etc. are even valid and scientific in today's age. Ayush system have played a crucial role in unprecedented times of COVID through their guidelines on side effects, prophylactic medicine, and curative medicine for mild and moderate cases. Currently, the demand for Ayush medicine has increased tremendously at international level with rising awareness about health and fitness and changing lifestyle. Ayush education and treatment is also increasingly becoming a part of medical treatment in the various countries. To disseminate the potential of Ayush traditional system, Ministry of Ayush has took active initiation and plan to organize a series of campaigns in view of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The year-long campaign include cultivation of medicinal plant for farmers, Ayush Aapke Dwar, which is the distribution of medicinal plant to 75 lakhs households, distribution of Ayush prophylactic medicine with special focus on 60 years and above age group, organization of a series of lectures to school and college students on Ayush system, and launch of a Vibrek application. I would like to reinforce that vision and progress of our country lies in hands of our students. Thus, building their physical and psychological health become a crucial responsibility. Ayush has a capacity and wisdom to serve all sections of the society. Orienting today's young mind towards our traditional Ayush system will help them grow healthier and stronger, who can contribute immensely in coming future times. The objective of the Ayush system is to emphasize in promoting health to prevent disease and cure for the disease. It is always wise to prevent invasion of the disease rather than start treating it after its manifestation. Prevention is better than cure. This is the exclusively possible by imbibing the good behavioral source as explained in our tradition and culture. I urge all of you to come forward and adopt the Ayush way of life and spread the culture globally. Thank you. So this is most honorable Dr.
Munshpara Mahendrabhai ji, who is an Honorable Minister of State, Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development. And sir, we are very thankful for you for encouraging the young minds and addressing this session and also sparing your precious time for this program. Now, proceeding forward, I would also like to our chief guest, Dr. Sadananda Sonowal sir, who is an Honorable Cabinet Minister, Ministry of Ayush and Ministry of Ports, Shipping and Waterways, to kindly address this session with his words of wisdom. Azamika of the monster covering various sectors and events in schools. Its focus to make students aware of traditional medicinal system. In which visions is to inspire the young generation to move forward and realize the dream of healthy India. My student base, this includes hands-on technique of special focus on the above 60 years of age group, lectures, and distribution of IEC material to schools and college students and launch of wide act. These activities have been initiated as the Ayush Week, which had national event for Ayush students on the topic surviving the storm through Ayush self. Ayush intervention in COVID medicine on August 30th, 2021. The backbone of each strong nation is its student. Students who are the youth of a community, of a country, by the pursuit of their energy are the building forces of a strong nation. They should equip themselves both mentally and physically so as to make themselves strong foundation of a great nation tomorrow. Ayush system has the capacity and wisdom to serve all sections of the society. A student race orienting today's young minds towards Ayush will help them to grow healthier and stronger. Ayush system discuss about both preventive and curative aspect of diseases and also give advice for the attainment of a long, healthy, and happy life. Apart from prescribing treatment to various chronic and complex diseases, they emphasize on adherence to certain set of daily and seasonal health promoting practices. This science empower us to take our health into our own hands by providing simple practices that can be easily implemented over time to achieve a happier, healthier life. When we are healthy and balanced, we are able to fulfill our dream and share our responsibility as a part of the society. Ayush systems speak enormously on the role of diet in maintaining health, food ingredients, food habits, their element
business. Different kind of food, preparation, etc. have been built very extensively. This is very essential aspect to be considered in today's scenario. The student friends fulfill many stressful situations during our studies and also in our social life. We need to adopt the traditional food and diet in our daily routine to be able to handle the situation confidently. Every one of us is familiar with the impact of fast food on health. Ayush system advocates consuming a balanced diet, which is beneficial and keeps the individual healthy. Similarly, regulatory structure regarding sleep, behavioral, food in society, etc. are universally described in classes by implementing the fundamental self-care practices into your life with easy to follow daily routine. You will become equipped with the necessary tools to cultivate balance, peace, and overall long-term health. Let's adopt the Ayush system to make our life healthy, happy, and living. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your precious address. Now, as a token of gratitude for all the attendees and participants who have joined this program, I would like to request Dr. Anil Khurana, sir, who is the chairman of National Commission of Homeopathy, to kindly provide us the vote of thanks. I request Dr. Anil Khurana, sir, to kindly provide us the vote of thanks. Thank you, moderator. I first of all thanks our Honorable Union Minister, Shri Sarvanand Sonowal ji, and our Minister of State, Dr. Munjbara Bahender Bhai ji, for providing all support and guidance and supervision to organize such a program at a big level through our Ayush colleges and schools who have been invited here. And also the mentorship of our Honorable Secretary, Padma Shri Dr. Vaidya Rajesh Kotecha ji, Shri Pramod Kumar Pata ji, हमारे विशेष सचिव, and our संयुक्त सचिव श्री पांड्यान जी, जिनके दिशा निर्देशों में ये कार्यक्रम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आज के समय, आज के इन दिनों में चल रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आज की ये गतिविधि जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो स्कूल विद्यार्थियों को, यानी विद्यालय के बच्चों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना, और जिसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर तनुजा नेसरी, जो डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और उनकी टीम का, साथ ही में डॉक्टर तारकेश्वर जैन, डॉक्टर जो उनकी टीम, डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अर्चना, जिन्होंने इस सारे मॉड्यूल को एक प्रकार से प्रेजेंटेशन करने में मदद की है, डॉक्टर विपिन जिठानी आल्सो। तो इन सब के प्रयासों से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा की टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन यहाँ पर हो पाया है। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किया। और ये मॉडरेटर्स डॉक्टर निकिता शर्मा एंड डॉक्टर प्रमोद
यादव जी जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम का संचालन किया, उनका भी विशेष आभार। हमारे बीच में उपस्थित रहे डॉक्टर देव पुजारी जी जो अध्यक्ष हैं नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और उनके साथी डॉक्टर प्रसाद जो एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, जिन जो इस पैनल एज ए पैनलिस्ट भी यहाँ पर थे, डॉक्टर व्यास, इनके कारण से कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे स्टूडेंट्स को दिए गए। और विशेष आभार उन सभी महाविद्यालयों का और विद्यालय जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनके विद्यार्थी जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी सटीक प्रश्न पूछे हैं जिससे लगता है कि उनके मन में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लेकर काफ़ी जिज्ञासा है। और मुझे लगता है कि ये वर्ष भर जो प्रोग्राम आगे चलने वाले हैं, हमें और बहुत से सुझाव विद्यार्थियों के माध्यम से भी मिलने वाले हैं। और एक प्रश्न के उत्तर में शायद ये भी बताना रह गया कि हम ये जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जो एक कोर्स करिकुलम है वो विद्यालयों के बच्चों के लिए भी तैयार हो रहा है। जो हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी आ रही है, योजना आई है, उसके अंतर्गत उसका उल्लेख है कि जहाँ इन बच्चों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में संज्ञान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हमारा आज सफल हुआ है, जहाँ पर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75,000 स्कूलों तक पहुँचेंगे। और इस आयुष सप्ताह जो 30 अगस्त से शुरू होकर और 5 सितंबर तक जो विशेष रूप से आयुष के लिए निर्देशित किया गया था, उसके अंतर्गत विभिन्न तरह के गतिविधियों में ये जो गतिविधि है, जिसमें जैसे डॉक्टर तनुजा नेसरी मैडम ने बताया कि 7,500 विद्यालयों तक पहुंचना, हमारे कॉलेजेस के माध्यम से जो आयुष के महाविद्यालय उनके माध्यम से पहुंचने का जो बात है, ये भी लक्ष्य हमारा कल पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं, इससे आयुष के प्रति जो अवेयरनेस है और ज़्यादा बढ़ेगी, लोग इन चिकित्सा पद्धतियों का संपूर्ण लाभ पाएंगे। और ये जो विद्यार्थी जो आज यहाँ जुड़े हैं, जिनके मन में शायद आयुष चिकित्सा पद्धतियों में अपना कैरियर को भी बनाने की मन में कहीं जिज्ञासा आ रही होगी, तो उनको भी और अधिक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली होगी। बाकी वो हमारे जो आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो कमीशंस की वेबसाइट है, इन पर भी जाकर और अधिक जानकारी इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आयोजकों का, और विशेषकर हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी, जिनके कारण से ये कार्यक्रम बहुत सफल रूप से आज हम संपन्न कर पाए। धन्यवाद सबका। Thank you so much, sir, for not only proposing such a nice vote of thanks, but also enlightening to so many young minds and also giving your precious time for the session. So with this, we come to the concluding moment of this entire program. And I hope that it has definitely proven as a sensitization drive for all the attendees and the participants. All I want to say is that Ayush as a career option can prove out to be so fruitful, as it has an enormous opportunity, be it in a field of research or clinical or academies. You can definitely choose it as a good career option and can serve the nation. So we should as a team work together and should take all the necessary steps to popularize and propagate Ayush in various corners of the country. And we should also not take this just as a program, but should take it as a mission for all to create awareness and propagating this pathy. So with this, I take your leave, and I also thanks to each and every participant, those who have taken enthusiastic participation in this entire program. So thank you each one of us. Thank you so much.